हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम टैक्टिक्स पे काम करने वाले हैं। यस, करते हैं। टारगेट हमारा होगा टू रीच 2600। तो let us start with the critical points. If you have not looked at the critical points, if you don't know the critical points theory, what is critical points and what is the thought process जो critical points पे base किया जाता है। सो आई वुड रिकमेंड यू, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस में जाके एक बार क्रिटिकल पॉइंट्स का वीडियो देख लो, सो दैट यू विल बी फेमिलियर कि हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। फिलहाल क्रिटिकल पॉइंट एक ये है देयर इज अ सिंपल पिन हियर, वी हैव f3, वी हैव टू बी केयरफुल विद पिन h4। क्वीन f3 को क्वीन h4 अगर मारा, queen takes king here, this check, this a bit annoying, no? So इससे अगर मारते हैं तो अब ये आता है तो डायरेक्ट मर जाएगा। बिशप टेक्स, बिशप h2, किंग h2, क्वीन d5 अगर मारते हैं, देन नाइट c, देन क्वीन d6 चेक। इंटरेस्टिंग। हमारे पास ये एक कैंडिडेट मूव है, एक f3 है। यू वांट टू सजेस्ट समथिंग दैट? क्या करना चाहिए यहाँ पे? बिशप इंटू d5, बिशप h2, टेक्स, knight c, check, king comes back, f5 जो हमें पसंद नहीं है। f3 को queen h4 check, we take this, we ignore ये h2, queen h2, king here, this check, here, queen here, kind of a perpetual there। king हमारा भाग नहीं सकता है 3, but not good at all। check, that doesn't look good, I'm sure it's not। if f3 queen h4 we take, queen h2 check, I'm sure it's not this। maybe after queen h4 we can go h3 first, prophylactic move। now the difference is he comes here, we take, this check goes here, this check, king f2, अब queen h4 check नहीं होगा, right? तो f3 होगा। that's not the right move। what? कैसे हो गया ऐसे? बिशप इंटू d5 है क्या? d5, बिशप h2, king into h2, queen takes, फिर f3 या फिर f3 कर सकते हैं। बिशप इंटू d5, किंग, नहीं ये भी नहीं, किंग इंटू h2 नहीं है यहाँ पे, किंग f1, किंग h1 and now knight c। okay, so next move he is saying अगर वो क्वीन d6 करता है टू प्रोटेक्ट द बिशप, तो नाइट इंटू e4 अटैक द क्वीन, एंड नेक्स्ट मूव ये मर रहा है। इफ ही ट्राइज टू कीप द बिशप प्रोटेक्टेड तो हम सिर्फ ऐसे करके या नाइट f6 चेक में क्वीन मार सकते हैं, राइट? चलो नेक्स्ट कहाँ से जाते? कंटिन्यू ट्रेनिंग। ओके, we have e5, we have knight e5, critical point तो ये है। we have knight e1 also, knight e1 he can save the mate like this, or we have bishop f8, he will have to protect this square।
We also have bishop into c into d4. Okay. Let us look at all these. क्या करना चाहिए? One be the correct one. Knight e1, threatening a mate. Also idea is knight f3 queen. There is bishop into e. Okay, queen a2 नहीं चलेगा वहाँ पे because of knight f3 check. King goes here, queen g1 mate. But he will go bishop into e4. Don't have knight f3. I don't see a way to continue. Knight e1 doesn't be the correct move. We have bishop f8 after queen a6. bd6 is controlled, so that also does the best. So what are we missing here? Maybe a move like knight f takes, queen f4 check and nothing, or a move like knight e5. Again the threat is this, but he takes, still takes. Bishop into, okay, interesting. Not at all easy after all, huh? Not easy. क्या होना चाहिए? Should not get stuck actually. You have to keep coming up with ideas. If you get stuck, then हमारा कैलकुलेशन एक हॉल्ट पे आ जाता है, जिससे we keep repeating the same moves and then we tend to lose a lot of time on the clock. Let's see. Let's look at a few new ideas. What can be done? Bishop h6 does not make any sense. Basically, I don't like him taking this bishop e4, you know. Bishop e4 wala move, annoying, definitely annoying. उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? Also is threatening rook into f7, bishop to f7. So wait, I think I found it. Oh no, there's a resource. There's a resource. I didn't find. Bishop into d4 अगर पहले ही मारते हैं, it takes with the c pawn. Bishop into d4 अगर मारते हैं, c into d4, d3, rook into f7, queen into f7, bishop into f7, f7. ये pawn को तो वो रोक नहीं पाएगा, that is for sure. He has one check, but the king can come back to g8. Then he has this check. छुपा देंगे. If queen comes here, it's very passive. Knight b4 या knight e1. That is winning. That looks like winning. But is that it? I don't think bishop into अगर d4 मारते हैं, ये थोड़ा इतना फोर्सिंग नहीं लग रहा है, इतना कन्विंसिंग लग रहा है. हो सकता है वो, बट इतना कन्विंसिंग लग नहीं रहा है. तो समथिंग विद बिशप f8, क्वीन नाइट यहाँ भी नहीं ले जा सकते हम. Do we have something like this? This here. वहाँ पर कुछ
बन नहीं रहा है लॉजिक। क्या होना चाहिए? इसको एक मूव बचा लिया तो भी क्या जाएगा। हाय हाय माधुरी, कैन सजेस्ट मूव्स। ब्लैक टू मूव है यहाँ पे, क्या करना चाहिए? यस, क्या करना चाहिए? शुड वी गो फॉर दिस, शुड वी गो फॉर दिस, और शुड वी गो फॉर दिस, या कोई और मूव है? फॉर एग्जाम्पल दिस, द नाइट f2, all looks very slow. यस शौर्य, हाय। ओके, वो तुम्हारा जो अकाउंट का नेम है वही दिख रहा है ना मुझे। दैट इज व्हाई आई सेड माधुरी। किंग f2, के f2 कैसे? किंग यहाँ पे ब्लैक टू मूव है, क्वीन तो f2 पे ही है ऑलरेडी। के f2 कैसे? यस, के f2। नाइट, नाइट कहाँ पे? नाइट f2, बट क्वीन है यहाँ पे हमारी f2 पे, और नाइट को के नहीं कहते, एन बोलते हैं। नाइट f2 भी नहीं। एनी अदर सजेशन? आई थिंक बिशप इंटू d4 c3 वाला एक ही है, लेट्स गो विद द इंस्टिंक्ट। दिस, दैट्स नॉट द मूव, ट्राई समथिंग एल्स। व्हाई नॉट? बिशप इंटू d4 c3 भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एनालाइज करेंगे बाद में। ओके सागर, बिशप e5, व्हाट इज द पॉइंट इफ ही टेक्स बिशप इंटू e5? नाइट इंटू e5 को बिशप इंटू e4। आई एम कंट्रोलिंग f3 नाउ, देयर इज नो नाइट f3 चेक। I don't think bishop e5 is also the correct move. You want to try bishop e5? It says right, but what's the point? Take. What if bishop into e4? What if bishop into e4? I don't see the idea. Oh, very nice. Queen h4, but what's the point? If he just moves the bishop back? Queen h4 में क्या हो रहा है सागर? ओके, रूक f7, लेट्स जस्ट सॉल्व द पजल। पहले तो इसको मार देते हैं, या नाइट f3? नाइट f3 नहीं चलेगा, रूक इंटू f3 इज अ डिस्कवरी, तो नाइट इंटू f7 मार देते हैं। ओके, इसको एनालाइज करते हैं, कैसे? इंजन चालू करके? नहीं, इंजन तो चालू नहीं करना है फिलहाल, नॉट नेसेसरी, खुद ही ढूंढेंगे। बिशप e5, बिशप e5, इफ एट ऑल ही प्लेस बिशप इनटू e4। यस श्योर, आंसर हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, वी ऑलरेडी सॉल्व्ड इट। क्वीन h4, how does that make any sense? What is the point behind queen h4 if I just come back? Okay, this check, and then there is a back rank mate, very nice. Queen h4 is a double attack, attacking the bishop and threatening knight here. So probably white will have to play bishop f3 to stop this. But in that case, what we can do is knight into f3, g into f3, queen f2 check, king यहाँ पे जाएगा. You can start grabbing the pawns.
You also have this move. This, you're threatening rook d1 mate. He doesn't have rook a8 because of this double attack. He will have to play something like queen c1, but then rook d2, threatening a mate here. Okay, great. Let's move on to the next one. Alright, king f3. ये rook hanging है हमारा. King looks weak and the material is white has 2 extra pawns. हमारे पास भी यहाँ पर passed pawn तो है वैसे. And mainly the advantage here looks like उसका queen direct check नहीं दे सकता queen या rook हमारे king को. तो we can use a move which is not a check. So the first move that comes to that should come to our mind is rook b1 and rook b2 here, right? So which one should we choose? Rook b1 or rook b2? Or maybe first this check, prophylactic, not letting him run away. He has to go here, then probably we can give a check. The king goes here. That is one option. So what should be chosen, chat? Tell me. What should we choose? What should we? चार लोग व्यू कर रहे हैं और 2 ही लाइक्स है गाइस, क्या कर रहे हो? जस्ट लाइक द स्ट्रीम फर्स्ट. डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. वी हैव टू रीच मैक्सिमम ऑडियंस. लाइक कर दो स्ट्रीम को पहले. गुड. ओके, सो वेयर वी? यहाँ पर हम सोच रहे थे रुक b2 या रुक b1, दोनों में से कौन सा चॉइस है? किस चॉइस के साथ आप जाओगे? You play rook b2, threatening queen f2, और ये रुक मर रहा है. The king cannot start running. Rook c3 आ सकता है, but then queen e2 would be a checkmate. He can save it with the queen, but then queen d1 would be a checkmate. Rook e2 नहीं आ सकता, queen into e2 है, रुक हमारा यहाँ पे होगा तो. Queen d1, rook e2, नहीं rook e2 नहीं है, rook e2 को there is rook b3. Rook b3 and also rook b2, it's dangerous. There is queen f1 check later. So I am not worried about that. But rook b2 looks like the correct move. He has to run and give up the rook. Good. Next. Okay, queen f7. Yeah, his king is weak. हमारा भी king weak है. उसके pieces भी active है. हमारे भी active है. This position is very dynamic. Very interesting. क्या करना चाहिए यहाँ? Let's think. So this is one critical point. This is another. This all 4 pieces are critical actually. सब hanging है. सब pieces hanging है. Yes, 6 members liked it. शौर्य, आपने क्लेम किया ना, आपने बोला ना चलो लाइक कर दो, तो सबने लाइक कर दिया. आपकी सुन रहा है चैट. हर स्ट्रीम में आया करो तुम शो. एवरीबडी इज लिसनिंग टू योर अपील्स. Okay, so queen f7. What should be done? One candidate move forcing his rook into e4. That does not work. यहाँ पर mate हो जाएगी. Takes g8 या queen takes g8. Yes, rook into g1 is another forcing candidate move. King into g1. What is the idea? Follow up. What should be the follow up? Sagar. Rook g8 or queen c1. Queen c1, but I don't see the point. Takes queen c1, king f2 अगर मैं आ जाता हूँ तो अब चेक नहीं है एक भी. This check is controlled. Rook f8 पिन नहीं आ रहा है. And what's the point? नहीं शौर्य, पॉइंट क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, रुक g1 किंग g1 क्वीन c1 अगर तुम खेलते हो तो किंग f2 सिंपली.
और इवन मे बी क्वीन f1, इवन क्वीन f1, क्योंकि ये चेक को मेरे पास नाइट g3 है, राइट? सो दैट डजंट सीम टू बी द मूव. रुक g1 हो सकता है, बट किंग इंटू g1 के बाद क्वीन c1 फॉर श्योर नहीं है. मे बी रुक g8. व्हाट डू यू थिंक? मे बी रुक g8. मे बी रुक g8 और रुक f8 फर्स्ट, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है. रुक f8 पहले इंप्रूव कर लो, अटैक द क्वीन, एंड नेक्स्ट मूव क्वीन c1. आइडिया क्वीन f1 वुड बी अ चेकमेट, इन दैट विनिंग. तो पहले रुक इंटू g1, किंग इंटू g1, रुक f8. व्हाट डू यू थिंक? आफ्टर रुक f8, where will the queen go? Queen can't give a check. Queen cannot protect c1. तो मे बी क्वीन e6 वगैरह खेल देगा वो. f1 भी वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता क्वीन से. देन क्वीन हियर एंड क्वीन f1. दैट शुड बी राइट. टेक्स रुक f8. yes, let's move on. Next. Okay, king and pawn end games. King and pawn end games are very very interesting. king and pawn end games में सबसे ज़्यादा अगर कुछ भी हमें हेल्प कर सकता है तो दैट इज कैलकुलेशन. क्योंकि किंग एंड पॉन एंड गेम्स एकलौता ऐसा एंड गेम है वेयर यू हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्युटली अंटिल द एंड, राइट अंटिल द एंड. पूरे एंड तक जाना है. दोनों को क्वींस बनने के बाद विनिंग आने तक पूरा वेरिएशन एंड करना है किंग एंड पॉन एंड गेम्स में. So let's start with our calculations. So one move we have is this. Another move we have is this. So one idea is takes, king c4, king e7, king d5, king here. Now we want to put him in zugzwang. But कैसे? Because he has king e7 and king d7. हमारे पास यहाँ पे infiltrating point नहीं है. That's one option. Another option c6, but I don't see the point. अगर वो b6 या इसको मार भी देता है तो we don't have any entry point for our king. So होना हो कुछ तो cd6 में ही है. cd6, cd6, king here, king here, here. King c4 you can play, but if I take, now you take king e7. आगे एंट्री पॉइंट नहीं है ना हमारे पास. या कुछ मिला आपको? X is can play c5, waits. I mean c4 he waits. बोलो फिर शौर्य. Got one what? ed c4, king e7, king d5, king d7, c4, king e7. First b5 I think. आइडिया इज उसको a6 नहीं करने थे ना. c6 से हमारे पास एक एंट्री पॉइंट आ जाएगा. So cd, king c4, king e7, here, and now then of king d7 itself he can go a6. But then b5, takes, king d7, c4, king e7, c5, dc5, king c5. That should be winning. king b6, king d7 आ रहा है. Yes, शौर्य वो है, but
नो, किंग c4 इफ यू कैप्चर बैक विद द पॉन तो हमारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा ना. कैसे पास्ट पॉन कैसे बनाओगे? नो, cd6 is correct. First b5, I think. First b5. Idea is to have this idea. जो हमने सोचा था ना वही आइडिया, बट किंग c4 किंग d5 को डिले करना है. नो, नॉट करेक्ट. योर आंसर इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे या वी हैव टू प्ले ad5. वी हैव टू पास्ट पॉन्स. दैट शुड बी विन. We need to be precise, guys. We need to be precise. Okay, there is a pin here. I don't see a way, a good way by which you can save it. कैसे बचाएगा? Oh, oh, knight f3 is a check. What am I looking? What am I looking? No, not that. So then into e5 एक है, 5 एक है, queen into d5 एक है, queen into d5, rook here and then bishop d5. नहीं? Bishop d4, now knight f3. Oh, this is again hanging. We are rushing. We are rushing. Bishop g3 से जाना होगा फिर, so that bishop इसको protect करेगा. और it's okay. So we have to choose. ये है, ये है, ये है. So here only move is this. We go here, then there is no check. We are threatening this mate. That wins. Here he has to go there. Now we can give this check or we can take this. If we take this check, this, or we give a check first. He goes here, we take this, he comes here. Into a2. Now we are threatening this. Either rook f1 or this check. Rook f1 just gets the king closer, doesn't do much. उसको rook c3 करना होगा. f2 भी जा सकते हैं, e4 भी. King f2 attacking the rook, e1, but then this check and wins the rook. That should be check. What? King f2, rook g4. Now this. No, but wait, I don't get the point. अगर यहाँ पे rook takes a2 किया, so how is that a draw? f6, huh? Okay, but there is rook c1. Oh, okay. So what we have to do here is first attack the rook. Now the rook has to move, और rook के पास h मतलब फर्स्ट रैंक पे जगह नहीं है. h1 से लेके e1 तक. rook अगर ऊपर आता है कहीं पे, we have this mate. That is why he has to play this, and now we can take. We are threatening this. rook के पास again फर्स्ट रैंक पे जगह नहीं है, and rook ऊपर आता है तो we have rook. How much time? Let's see. 2600 रीच करने की कोशिश करेंगे या 5:30 तक. अगर जल्दी रीच हुआ तो थोड़ा ब्लिट्स खेलेंगे, राइट? क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो वी हैव g4, वी हैव h4, or we just have an idea to wait. I think we should wait. The king waits, then h4, then here. So this,
ओके, क्लास अटेंड करना चाहिए हमको, क्लास नहीं छोड़। क्वीन H2 एक है, नाइट इंटू E3 एक है, नाइट इंटू E3, F इंटू E3 में F4 का नाइट मर रहा है। यस यस श्योर, यू कैन, व्हाई नॉट, से पूछो मत, क्लास अटेंड करना चाहिए, क्यों नहीं। Is there anything better than knight into E3? Knight into E3 looks good. F into E3 को ये मर रहा है, rook into E3 आया तो we can take with the rook and then take the knight. And after knight into E3, queen hanging है, knight hanging है, he has to take. But I don't see. I mean, there's no defense against it. But is there anything better than that? That's the key in chess. Queen H2 check, king यहाँ गया. There's no queen H1. There's no knight E3. There's no knight F2. Yeah, I think it's knight E3. What? Knight E3 भी नहीं है. Knight into F2. क्या हो रहा है आज मेरे साथ? मेरे साथ हो क्या रहा है आज? It rook into E3. Rook into E3. Oh, takes, bishop takes, rook takes, this check, and then there was this fork. Okay, it takes rook into, take with the bishop. If he takes again this check, and then there is this fork, so knight H3. But now, actually I'm not used to commentate and play or solve, so it takes some time, but I'll get a hold over it in a few more streams. I'm also new to streaming chess. Okay, let's see. We have this move, and again if he takes, we have the same idea. But what if he just comes rook, and rook F1 को तो mate हो जाएगा. What if he just comes rook, queen here, king. Oh, bishop takes F2. This and this. Bishop takes F2. Yeah, it takes. Okay, let's be more careful. 3 versus 4 pawns. Pawns are coming here. They're going there. So, from here, can play this. This. This takes. How is he going to stop this? I don't see. Comes here. This. Here. The point. Bishop A3 defense है उसका. क्या कर सकते? So A5 C4 takes. How about this move? Because ये pawn की वजह से ये diagonal तो बंद है. I think that is the way. यहाँ what?
How are you going to stop this? This. Okay. Didn't calculate deep. दोनों के queens बन. We have to take. We have to come here. And now. Okay, to win. Maybe just take this, yeah. Past pawn. Second past pawn. Oh my god. 2600 जाना है या 2300 जाना है? नीचे नहीं जाना है हमको. को जाना है ऊपर 2600. क्या कर रहे हो ये? टेक्स h4 कर सकते हैं पास्ट पॉन के लिए. अनदर ऑप्शन इज जस्ट किंग c. यहाँ पे मारने दो. So let's say king c4 takes this. यहाँ पे takes this d2 this h4 पे था ना. कहाँ पे था? king c4 gh king c5 king c5 king h4 h3 c4 king c5 h4. this दोनों के क्वींस बन जाएंगे. which doesn't look. then h4 कर सकते हैं हम लोग. h4 कर सकते हैं. h4 अगर करते हैं तो टेक्स के बाद वो ये पॉन मार ही नहीं पाएगा इजी. के पास एंट्री पॉइंट नहीं होगा. बट h4 के बाद ही कैन कम हियर. वी गो हियर king d6. in that case we have this and then h5. king e5 king d3 king f5 h6 king takes here. that should be win. Another option here is king d3 पे. I mean when we play h5 king 5 king d3 उस पे f3 खेल सकते हैं. take d3 नहीं है. we can take. we come here takes and that should be win. पहले h4. not a good move. क्या चल रहा है यार मेरे? क्या चल क्या रहा है? just exchange and play king c. why am I trying to complicate things? just take. वो ये pawn पे अटैक ही नहीं कर पाएगा easily. easy positions तो है. no worries. we will fight guys. we will fight. okay. क्या करना चाहिए? let's drink some water. क्या करना चाहिए? डेफिनेटली यहाँ पर कुछ. बट व्हाट एग्जैक्ट? 6 gh6 ये स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल. क्वीन f3 एक मूव है हमारे पास. देन बिशप h6 ये आ सकते हैं. बट क्वीन f3 को पहले नाइट c6 आ. so how about playing bishop h6 takes and then queen h3 directly? queen f3 I mean. queen g3 उसको बचाना होगा. right. then we can take this. yeah that works. queen f3. now this. good. चलो some plus. d4 is 1. g8 I don't like. ट्यूशनली रुक g8 तो सही नहीं लग रहा है. d4 खेल सकते. queen d4 how is it going to save this rook? या queen नहीं यहाँ आ रही है because there is a pin. we'll have to play this or even knight into d. okay if you play check king will
can play knight into d5, getting knight into the game. Black should definitely be much better. Knight बहुत अच्छा है, चेंज अप के लिए काफी अच्छा कॉम्पनसेशन भी. But is that it? Is that the best? Queen d4 है. Is wait, we have rook f6. We have rook f6. Rook f6 के बाद ये चेक नहीं है, उसके पास ये एक ही मूव है. Then we can take, gives a check, king goes here. We can give a check from here, but then rook f7. I think so that works. d4, rook f6. He has to give up the queen. Good. Chalo, good calculation. Next. Now he wants to simply come and grab this. This. Oh, but then there is this. So this takes this. That should be this if you come. Now if I this takes and take. I just go here and he is going to need a lot of moves. You guys please like the stream, let's reach to the maximum audience. I want to reach 2600 today in tactics. Okay, interesting. Rook into c5 I don't like, uska king activate ho jata. We can play king b4 here, forcing him to take if he wants. So this takes. How is that end game? 5. हमारे पास आउटसाइड पास पॉन है, मतलब वाइट के पास एडवांटेज तो. That should be winning. b4, what if it doesn't take and just, but I think that's the problem. If it goes away it's not good. So first let us take and then play this. Goes here, this comes here, this takes, this. That should be a draw. उसका भी pawn 5th rank पे है. So what else can we do? Take this. Where can we gain a move? Or maybe पहले king b4, c5, king here. Then he takes. Are we gaining a move? We are definitely gaining one. Takes this and or even king here. If he goes here, we take this pawn. If he goes here, we play g5. That should be. So I think rook c5, king c5, king c3, king b6. Not right away running behind this pawn, but I think king b4 is the correct one. Now if you play c5, c4, and after king here, if he goes here, this. Have we gained a move? Definitely have. We are taking the pawn and he still is on e2. Okay, we have to take here. Good, very nice. Next, suggestions are welcome in the chat. If you want to try out your mind. चलो f5 खेला है ब्लैक में. मटेरियल क्या पहले देख लेते. 6 pawns versus pawns, 4 pieces, 4 minor pieces versus 4 minor pieces. सिर्फ उसका किंग वीक है, पीस डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है. वाइट के पीसेस काफ़ी अच्छे से, हैंगिंग तो नहीं है बट देयर इज सम प्रेशर ऑन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट कैन वी डू. 7 बहुत सेंसिटिव लग रहा है. इफ वी ट्राई टू एंटर ऑन दैट स्क्वायर, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट समथिंग. देखते हैं क्या कर सकते हैं.
ये एक है, but what is the purpose? See the purpose. Knight into g6 एक है. So his idea is to take and then play this, right? Double attack. Knight g6, knight into मार सकते. वो बचा लेगा तो ये मर रहा है, so he has to play rook f. So knight getting trapped. It's square है वैसे. White के लिए अच्छा तो लग रहा है, but is there anything better here? Better than that? Okay, this knight is hanging anyway, so I think that's the way. I have to admit I missed this move. I missed. Why I missed? So what's the idea? Where do we want to place our queen? अभी ये मर रहा है and मेरे पास ये squares नहीं है to keep protecting the bishop. I think queen f3 makes sense. In h6 we have this attacking this, but then there is knight f6. I am not totally happy about. So then what else? Suggestions, guys? What else? Queen f3 एक ही मूव. क्वीन को जगह भी किधर? 3 और f3. 3 में तो it has to be queen f3, rook h7, and queen takes f5. Right? Queen takes f5. We're threatening things on f7, so he has to play knight f6. Now we can go into this where queens get exchanged, queen into e5, knight into e5, but again I'm not very happy. 3 pawns to hai, but there is always knight into f2 there, so I'm definitely missing something. What is that? I don't want to break my streak of solving positions correctly, so let us have a little bit of think here. h6. After rook h6, what do we have? Or maybe this is the way to go, because after queen c4 ये diagonal बहुत weak. He moves the knight, let's say we have queen c8 check, it's a mate, and if he takes the knight, then there is queen f7 check, meaning the, again, what are the material odds? He has two pieces, but his king is very weak. King is very weak. After that क्या करना चाहिए? Queen d3 खेलना चाहिए, takes and then queen c4, knight f2 तो नहीं है उसके पास, so है वैसे knight f2, but so convinced about black's position. कुछ तो होना चाहिए वहाँ पे. I don't exactly know what, but king is extremely weak. या मे भी कुछ और ऑप्शंस है जो हम कर रहे हैं. क्वीन f3 में कुछ है क्या? टेक्स, क्वीन 5, नाइट यहाँ पे आके क्वीन अटक जा रही है हमारी, अंदर नहीं जा पा रही. दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक.
Suggestions chat. It knight into e5. No, it's a check. Bishop into check आ रहा है. Otherwise, it was a bit interesting. But anyway, bishop g5 ही नहीं. ही लग रहा है फिलहाल तो d4. But I don't have that convincing solution after queen 4. Into g6. This check ही goes. Sir, wait नहीं. 6 मारना होगा. Then let's say knight into f2. g8 है वहाँ पे. ये आया queen f7 perpetual. I don't find a way to win. Oh, there is queen f6. There is queen f6. अगर bishop e7, then queen h8, queen into f8. And if he goes here, then bishop f7. He has to come here. We'll go bishop g6, forcing the king here, and then queen f7, queen h7 checkmate. Okay, that is one successful variation. So takes if I go here, and if he directly takes this check, this, yeah, then also same thing, checkmate. Okay, it has to be queen. No man, what is this? How come both the moves are wrong? Queen के पास जगह कहाँ है? और am I missing rook into d7? bishop g7 क्या मूव है यहाँ पे? कैंडिडेट ही नहीं दिख रही है. क्या होना चाहिए? नाइट d4. और bishop f7. oh bishop f7 into if he takes b3 खुल जाता है. if he takes there is d6 check. here I don't see the point. there is this check but it takes it sim. मूव क्या है फिर? 5 I don't see. queen into c5 तो नहीं. knight into 5. bishop to f7 interesting लग रहा है. king g6 I did not like. that is knight into h8 check. How could I miss knight into h8 check? Not that difficult. Okay, guys, like the stream, like the stream, like the stream. Okay, knight into h7. 5 pawns. He has just now grabbed 1 pawn, but he's also a piece up. What is his idea if I take? Queen h5 check, and he wants to take this. You can play rook f1, queen f1, king f1, this and that's 1. Knight f6, knight into g. ये भी मर रहा है. Next, h3, g2 looks like simply don't want to play this and lose time. h3, what? क्यों ऐसे? h3 में क्या हो रहा था? h3 क्यों नहीं? क्यों नहीं? जनरली प्रिंसिपल ये कहता है उसके पास अगर लाइट स्क्वायर बिशप है तो हमें पॉन्स पहले लाइट स्क्वायर पे पुश करने चाहिए ताकि वो ब्लॉकेड ना कर पाए. एंड यहाँ पर वो बोल रहा है g3 खेलो, पहले उसको अलाउ करो ब्लॉकेड करना. क्यों भाई? क्या पॉइंट है? h3. does he have this?
यहाँ पे चलो, देन A7। प्रॉब्लम क्या है H3, बताओ मुझे। बिशप E6, हाँ यहाँ पकड़ कर, दिस इज अ वेरी ट्रिकी मूव, द वेरी ट्रिकी मूव गाइस। बिशप E6, अब पॉइंट ये है, हेलो चेस वाइड वर्ल्ड, कैसे हो। बिशप E6, यहाँ पे पॉइंट ये है, इफ वी पुश H2 तो लाइट स्क्वायर्स पे कंप्लीट ब्लॉकेड आ गया। अब वी आर गोइंग टू नीड द किंग टू गो हियर एंड देन G3 G2, which is going to gain some time for white. जैसे I'll show you. You go here, king b6, yeah, king यहाँ पे a6. Now if you play g2, bishop into g2, king into g2, दोनों के queens बनेंगे, ये queen exchange हो जाएगी and then ये extra pawn की वजह से white जीत जाएगा। So दूसरा ऑप्शन बिशप e6 के बाद g3 हम खेल ही नहीं सकते क्योंकि h3 मर रहा है हमेशा। इंटरेस्टिंग, रिसोर्सफुल। लाइक कर दो स्ट्रीम को, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, लाइक द स्ट्रीम। या वी विल प्ले, जब खेलना है तब पहले टास्क तो रीच कर ले 2600। डेफिनेटली आई वुड लव टू प्ले विथ यू, प्ले विल प्ले, डोंट वरी, विल प्ले, आई प्रॉमिस। पहले टास्क रीच करते हैं। ओके, सो क्वीन C7, माय यूजर नेम, यस कुंज। We will play, but we'll have that thing separately. Now, currently we are on to a task. We have to reach 2600 ना, पहले करते हैं, बाद में खेलेंगे आगे की स्ट्रीम्स में। आई एम स्ट्रीमिंग फ्रीक्वेंटली, यू गाइस जस्ट कीप फॉलोइंग, लाइक करते रहो स्ट्रीम को, सब्सक्राइब करके रखो। खेलेंगे, डेफिनेटली खेलेंगे, सबके साथ खेलेंगे, सबके साथ खेलेंगे। लाइक कर दो स्ट्रीम को, लाइक कर दो, लेकिन ऑडियंस रीच बढ़ाना है हमारा। एक बार चैनल ग्रो हो जाता है तो वी कैन रीच टू द मैक्सिमम ऑडियंस, राइट। ओके, he has played queen C7, उसके पास एक्स्ट्रा बिशप है। वी हैव दिस रुक D7 मूव, यहाँ पे उसके पास डिस्कवर्ड चेक भी है, बट रुक D7 अटैक्स द क्वीन। D7, F7, बट लेट्स से रुक D7 को यहाँ जाता है, क्वीन यहाँ गए F7 को, तो वो क्वीन G8 आ जाएगा डिफेंडिंग। वी प्ले दिस एक डबल अटैक हो सकता है, बट क्वीन C8 से इट्स अटैकिंग द रुक। सो व्हाट शुड बी डन, एनी सजेशंस। यहाँ पर खेलते हैं ना मूव्स, बताओ मुझे। टेस्ट वाइड वर्ल्ड, कुंज देवी, मूव्स बताओ, व्हाट डू यू थिंक, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे पोजीशन। हेल्प मी रीच 2600, लेट अस रीच देयर टुगेदर। क्या करना चाहिए। अगर मूव्स में कुछ गलतियां करते हो तो डोंट वरी, आई विल टेल यू द करेक्शंस, आई विल टेल यू बेटर थॉट प्रोसेसेस। ओके, लेट्स सी। रुक D7 अभी तक मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, क्वीन C8 को सोचना होगा वैसे, इमीडिएटली कुछ विन नहीं दिख रहा है। इट्स ओके कुंज, इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स अबाउट बीइंग टच, बीइंग इन टच। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए हमको चेस में। यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव, डोंट वरी। पहले ही अगर खुद को ऐसा नेगेटिव इनपुट दे दोगे, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू प्ले चेस, तो कैसे होगा। ऐसे मत करो, बैक योर सेल्फ। यू लाइक द गेम, दैट मीन्स यू आर स्मार्ट। तुम ये स्ट्रीम में हो, इसका मतलब तुम चेस में टाइम स्पेंड कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर स्मार्ट। द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस। रुक D7 ही देख रहे हैं हम, चेस वाइड वर्ल्ड। रुक D7, क्वीन C8, बट आगे क्या, कंटिन्यूएशन कैसे करेंगे। कंटिन्यूएशन कैसे होगा।
कुछ और है क्या यहाँ पे? मे बी दैट यू आर मिसिंग g5 आइडिया रुक d8, बट देन क्वीन g5 को अगर उसने हाउ इज ही गोइंग टू स्टॉप रुक d8? क्वीन d7 कुंज नहीं, क्वीन d7 मैंने मिस कर दिया तुम्हारा मैसेज। क्वीन d7 सही नहीं होगा यार, बिकॉज आफ्टर क्वीन d7 एक बार क्वीन एक्सचेंज हो जाती है तो ब्लैक इज अ पीस अप, दैट्स नॉट गुड। Either rook d7 or queen g. How is he going to stop rook d8 here? If we come queen g5, 5 के बाद वो d8 का थ्रेड बचाएगा कैसे? बिशप के पास जगह नहीं है, बिशप यहाँ जा सकता है, बट still I suppose rook d8, yeah? But rook d8 he has queen f7 and I don't see the point. Queen 5 8, oh but queen f7 को ये मरना है ना, so queen g5 looks interesting. rook d8 कैसे बचाएगा? h6 है उसके पास, but then this check, this and then this check. I think queen g5. No, not queen 5, 7, yeah, 7 ही और क्या हो, और क्या ही हो सकता है यहाँ पे? into g7 को ये मर रहा है, queen g5 को ये मर रहा है, मे बी queen d3, जब f6 पे ये मर रहा है। This is good, this is good. But queen g5 पे क्या डिफेंस? I'm just, let's see queen g5 पे क्या डिफेंस। बिशप f8 हमने देखा था राइट, rook d8 खेलूंगा, और भी देखा था g3, then queen f7, ओके दिस इज हैंगिंग, ये नहीं देखा मैंने, बट queen into c1 if I take queen here, this a draw, yes it is, ये मर रहा है, so this is what we missed. Keep continuing. Okay, let's go guys. Do not forget to like the stream, like करो, subscribe करो चैनल को. He has played e into d6. This bishop is hanging, but this knight is hanging at the same time. Knight d4 4 win है, control, just possibilities scan कर रहे हैं हम. Can go short castle here generally. ऐसे पोजीशंस में जहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट लीड होता है, उसका किंग वीक होता है, सो रैपिड डेवलपमेंट इज द की हियर, वेरी इंपॉर्टेंट. तो शॉर्ट कैसल कर सकते हैं यहाँ, शॉर्ट कैसल, एंड व्हाट्स हिज पॉइंट नाउ? डेवलप कैसे करेगा? नेक्स्ट मूव और आइडिया इज टू प्ले रूकी. ही कैन गो d7, but after d7 what do you think? queen into f4 एक है, आई थिंक कैसल इज द करेक्ट वे. कैसल नहीं है, why not? क्या कह रहा है फिर? 8, I missed knight into 8. Okay, 95. फिलहाल तो ये मर रहा है, रुक into d5 मार के d5 मार सकते, getting 2 pieces. into d5 को f6 आएगा, and then what? क्वीन यहाँ पे लेके जाता हूँ इसको सपोर्ट करने के लिए, तो ये मर जाएगा. क्वीन से पिन मेंटेन करते हैं तो बिशप से मार के फिर ये मर जाएगा.
क्या करना चाहिए? इंटू डी बाद ही कुछ takes this, there is this knight f5 g5 e f5 तो मार नहीं सकता there is a, तो g into f5 first queen check, queen g7 तो ये hanging है, has to go here. Now can we just take and e6 is that winning. pawn structure उसका बहुत that enough for this leeches puzzle generator enough है या बेस्ट है क्या? सिर्फ बेस्ट में बिलीव कर. takes d5 f6 knight f5 takes, देखा नहीं बोल दिया, मना कर दिया, भी नहीं बोल रहा है. नाइट एफ फाइव स्ट्रेट फॉरवर्ड था क्या? नाइट एफ फाइव स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मैंने मिस कर दिया. नाइट एफ फाइव आइडिया इज मेट थ्रेटन कर रहे हैं और e7 मर रहा है. क्वीन f6 अगर आता है तो वी कैन जस्ट टेक दिस, और इवन वी कैन जस्ट टेक दिस, ये रुक मर जाएगा. तो इट इज सिंपल. आई डोंट नो, मिसिंग अ फ्यू थिंग्स. चलो आज 2500 का एक गोल करते हैं, चेंज कर 500. 2500 क्रॉस तो करते हैं पहले. rook b4. Now we have rook d1. Can take, rook takes this check, but king into d3 it doesn't seem to be winning here. d1 king पर c1 मार दिया, that winning. और rook d1 he comes here, we give this check first, here and here. Okay, that's one. I think rook d1 king here and rook into d1 looks. If you give this, या पहले इसको check दे देते हैं, but then if bishop e3, then rook d2, king goes here, d1 check, rook 3 is a checkmate. d1 here उसको किंग हटाना पड़ेगा, then इसको मार देंगे pawn up है. Now first and we take. तो मेन पॉइंट वाज बिशप e3 नहीं चल रहा है, वो देखना था हमको. All right, like the stream guys, like the stream. कैचेट देके इसको डिफ्लेक्ट करके फिर इसको मार सकते हैं. अभी फिलहाल तो हमारे क्वीन. नो अदर ऑप्शन. नाइट e7, रुक h8 करना पड़ेगा, बिशप h8 एंड इसको मारते हैं, बट वी विल बी डाउन अ रुक. दैट विनिंग. हाउ इज इट विनिंग? हाउ इज इट विनिंग? हाउ इज इट विनिंग? आइडेंट एफेक्ट कर सकते हैं, बट क्वीन मर रही है हमारी.
हाउ अबाउट किंग e2? अगर ये मारता है चेक, बट वी डोंट हैव एनीथिंग टू कंट्रोल द डार्क स्क्वायर, सारे डार्क स्क्वायर्स खाली पड़े, डोंट हैव अ डार्क स्क्वायर बिशप. हाउ अबाउट queen into c3, b into c3, rook here, same problem. Do we have f6? But then rook takes f6 इंटरेस्टिंग था. f6 इंटरेस्टिंग लग रहा है, but doesn't work here. Rook h8, bishop h8, queen takes. I don't see how white is better there. If he into a2 भी अगर उसने मार दिया से, तो आगे थ्रेड्स कैसे जनरेट करेंगे? लेट्स से क्वीन हियर, बिशप c3 चेक, किंग मूव्स, रुक a1. अब रुक यहाँ पे नहीं आ सकता अटैक में, so what are we threatening there? That's the whole point. I don't see the threat actually, and if I don't see the threat तो sacrifice देके फायदा क्या है? ये मार के कुछ लग रहा है थोड़ा हो सकता है, बट इन वो डार्क स्क्वायर का जो कंट्रोल. हाउ बट नाइट इंटू f8, नाइट इंटू f8, बिशप इंटू d2, किंग इंटू d2, ये चेक. तो नाइट इंटू f8, बिशप d2, किंग d2, क्वीन f8. किंग f8 भी नहीं मार सकता, रुक h8 है. क्वीन f8 मार सकता है, बट देन देयर इज दिस, ही प्लेस क्वीन g7, वी टेक टेक किंग टेक्स, बट वो भी विनिंग नहीं लग रहा है मुझे. ये पॉन स्ट्रांग है, ये पॉन मर रहा है. वो देयर शुड बी समथिंग एल्स. We have knight h. Knight h8 does not make any sense. f6, why f6? That also does not make. So rook h8 is the only way, I think. Bishop h8 के बदले और कुछ है. What am I missing here? What am I missing? King e2 कर दिया तो. King e2, bishop takes and straight rook g1, king g7, knight e5 check. Oh no, knight here. Okay, how about this check? Goes here, comes king e2 खेला. Let's check. And yeah, I can play this. King e2, rook g1, interesting तो लग रहा है. Right. King e2, rook g. Yeah, this way we have this check. We have knight e7 check. We have rook h8 check. Looks interesting. Takes, goes here. क्या करेंगे? g8 है, but ये मर रहा है. Can come back. Can come back always. King यहाँ पे ये check. How about just play this and take this? Doesn't have b1. Rook hanging है उसका. Can go rook f6.
I don't want to go wrong at this point. E into f7, king into f7, we have interesting option, but then the king starts running. I don't like that. Rook h8, king g7, rook into d8 is very simple, by the way. But chess or anything, I mean, demands the best. ये बेस्ट है क्या यहाँ पे रुक क्रिएट करना, और मे बी नाइट इंटू सेवन, नाइट इंटू e7 ये आया, वापस आए चेक, किंग यहाँ पे गया तो रुक h8, रुक इंटू f8 वुड बी अ मेट, किंग हैज टू कम टू द g फाइल, बट देन किंग g7 आ जाएगा, समथिंग आई डोंट लाइक. वी हैव दिस चेक बट देन देयर इज दिस. ओके, वो तो अच्छा नहीं है. आई थिंक रुक h8. ऑलराइट, सो हम चलो कहाँ पहुँचे, 500, 2500 में तो है, इस 2500 भी मेंटेन, 2600 करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे. स्टे इन टच, सब्सक्राइब करके रखो. एक गेम खेलते फिर जाते हैं, 3-0 खेलता हूँ, अब फटाफट खेलते हैं. e4 3 माउस स्लिप हो गया क्या उससे. b3 दीवान का प्रिपरेशन कन्वर्ट कर रहा है क्या. नाइट e5, f6 तो नहीं पास, think I'll go knight here, castle 6, yeah, castle 5. Okay, looks like a very for me, और या टेक्स और जाते हैं कि हमारा कैसलिंग हो गया है. आई वुड लव टू ओपन द करने के लिए जो करना पड़ेगा. नाइट हियर, लेट अस स्टॉप हिम फ्रॉम कैसलिंग, एंड टेक्स, उसके लाइट स्क्वायर्स बहुत वीक, वांट्स टू टेक दिस, बट डोंट आई हैव चेक, आई हैव अ चेक. g3 takes, bishop g3 goes here, bishop 4 king. It's quite deadly for him. 6. I have this move by the way, but queen e2 के बाद क्या, queen e2 के बाद कुछ दिख नहीं रहा. f3 है, queen h6 जाते हैं क्या, not allowing him to develop. queen h6 I think is, तभी f3 चेक में आ रहा है और queen e3 नहीं है उसके पास. ओके, तो f3, किंग यहाँ पे, आई थिंक देयर इज, मार देते ना इसको, मार देते क्योंकि नाइट e3 फोक तो है हमारे पास, नाइट e3 फोक है. और कुछ है क्या बेटर, ये चेक भी बहुत अच्छा है वैसे, तो किंग यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ गया तो रुक आ रहा है, कौन विनिंग. नाइट e3 फोक देने की जरूरत भी नहीं. एक रीमैच करे उसको, इफ एट ऑल ही वांट्स टू, नहीं खेलना है उसको, ठीक है. Okay, so I think that's it for today. Do like the stream, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. That's our agenda. वो तो करना है हमको, so that you can get really instructive content. लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा मैं. आ जाओ चेस वाइड वर्ल्ड आ जाओ, खेलना है, एक गेम खेल सकता हूँ मैं, गेम खेल सकता. ये आइडिया मेरा, चैलेंज करो मुझे. चैलेंज करो, तुम्हारा आइडिया क्या है.
ओके सेम आइडिया 1950. चलो खेलते हैं. d4 knight f6 6 5. I think I'll go d5 cd5 knight d5 piece castle knight c6. I'm okay to play the knight c market का पोजीशन थोड़ा pawn structure खराब हो जाए. Now I can play e5 actually in some space. Bishops या exchange, let's exchange. जितना exchange करेंगे उसका वीकनेस जो है वो परमानेंट बढ़ते जाएगा. ओके एक में f6 कर देते हैं पहले. किंग लेके आते हैं ना, आते हैं. We can go knight a5. Looks like a very good position. Okay, मर रहा है फिलहाल. How to protect it? No, I don't want to draw. ये मर रहा है वैसे. Into d2 मार दिया तो. Why would I accept a draw in this? Okay, I'll exchange piece of owner up into t6. Okay, rook here. Exchange takes 7 a6. 4 I'll push. 5 pawn structure create कर देंगे. Here 4 take. We won't take. Take. Up c4. I missed this actually, but तो मार देते हैं. तो मार दे. Let him take it. Up b7 and we'll start pushing. a6 पहले तो. Yes, so चलो I'll take your leave. Was a good game. थोड़ा no not now we will later. यहाँ पे अच्छा खेले तुम, लेकिन एक I would this move I did not like. dc5 was not the correct timing here. Oh, okay, that's okay. dc5 I thought so. dc5 I didn't like position because dc5 के बाद I could create a long term weakness. ये pawn structure तुम्हारा खराब हो गया. So black was definitely better in this position. So even if you don't blunder, let's say I play knight a5. I mean, if you don't play this, how are you going to improve the position? Yeah? How would you improve the position? You play this. One move I'll play rook d7 and rook c8, and this is a long-term weakness. This is a long-term weakness. Your knight's not coming anywhere. Yeah. Okay. Chalo. Good game, guys. Okay, so I'll take your leave now. Allow me, and I shall see you in the next stream. थोड़ा सा ब्रेक होगा नेक्स्ट स्ट्रीम में. लेट्स सी कुछ दिनों के बाद आऊँगा, बट आई विल बी रेगुलर, डोंट वरी. We will see next time, sir. I can understand this. Yes, definitely next time whenever I'll be playing blitz हम और खेलेंगे. Okay, चलो I'll take your leave now, guys. Bye, take care. Like the stream, share करो, जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को. Yes, bye, take care, guys.